Hi, I'm Atharv. I'm founder of Sarvait. तू हिला क्यों रही है? Hi, I'm Yatika, President of Sarvahit. Hi, my name is Haya Sharma and I'm the project head of Project Astitva. Oh, nice. I am Mansha, the project head of Project Pehchan in Sarvahit. And चलें शुरू करें. कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, तेरे आस-पास रहूं दिल भी ना है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, जाहिर करूं क्या है जो So back then when I was in class 11th, I had this school जो मेरे बिल्कुल बगल में था. So you know I used to just go there. तो वहाँ पर HIPC section और वो सारे लोग जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है वो सारे बच्चे वहाँ रहते थे. तो I used to just go there and just sit there with them, and it actually gave me it developed a sense of love for them. I started with it. I was just an average kid, like everybody else. Nobody actually trusted in me, but the only person who saw potential was the founder. Thank you so much for the one who actually saw potential in me, who let me stay into the organization. सारी चीज़ है मतलब it's not like other organizations and all that where you will feel judged. Even if you are newcomer या फिर आप पुराने हो, you will feel कि Sarvait is a home. There is no judgment. Everyone is so real and to be specific, very desi people, ठीक है, जिनके साथ you can do whatever you want. आप judge नहीं होगे, आप रो लो, आप कुछ भी कर लो, will not feel that judged. So I joined Sarvahit with an ambition that I can help more and more people, and so far it's going very well. And I always wanted to work in something which I built, and eventually now we are family and we are a family. So yes. The most chaotic memory that I remember in Sarvahit are the last 2 months. तब हम लोग गिरते गिरते बचे थे and we explore more and more different things. So yeah, it was one of the most favorite memory I have upholding till now in Sarvahit. Chaotic memory of Sarvahit would definitely be Project पहचान का fundraiser event MUN जो कि एक स्कूल के साथ collaboration में हुआ था. Everything that happened in the last 2 months in itself was very chaotic. We went through the lowest and we rose to the highest in everything we did. बेस्ट पार्ट उसका यही था कि वी फाउंड ईच अदर. Sarvahit वहाँ से एक दूसरा घर बन गया, सब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए. मतलब हर चीज़ ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करके बाहर निकाला है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीथिंग जो लास्ट 2 months में हुई है. ऑल्दो सब रोए हैं, सब ने एक प्लेट में खाना खाया है, कोई गिरा है, कोई पड़ा है, हमने टेबलें साफ़ करी, हमने झाड़ू मारा है स्कूल में, हमने सब कुछ करा है, एक सर्टिफिकेट अपने हाथ से लिखा है. बट या दैट प्रोजेक्ट वॉज द worst and also the best part of Sarvahit till now. The person would be the founder of the organization. One member I hate the most would definitely be our founder. Very fortunately, very obviously, a very straight answer by the way. फ़ोन नहीं उठाता, घोस्ट करता है, रोता रहता है, काम नहीं करता, रील एडिट नहीं करता, रील अपलोड नहीं करता. Work on yourself. If I were the founder of this organization, मैं थोड़ी स्पाइन दिखाती, लोगों से सुनती नहीं हर जगह जाकर और MUNs में गड़बड़ करके नहीं आती. Who's most likely to kill someone? Yatika. me maybe, Think member in Sarvahit. Athar, Athar. the founder. Slap other member. Mansha. Mansha, the head of Project Pehchan. Okay, so the one last message which I want to give to Sarvahit is that we have came so far. It's been a year, although it felt like a decade, but it's just been a year, and we went through a lot, with me, without me, and we have worked a lot too. कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, ठीक है, but at the end what stays the most is कि हम लोग साथ में अब भी, and we are still working, and हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और ज़्यादा इसको अच्छा करते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जानेंगे, एक दूसरे को और अच्छे से जानने का ट्राई करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे. गलती होगी तो माफ़ कर देंगे
ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहेंगे और एक दूसरे से प्यार करेंगे। Happy Happy 1 year to Sarvahit.